Only 9 has given. One student left. Muskan, Aditi, Urvi, Neeti, Sharon, Anushka. Okay. So let's begin with the today's topic. Today's topic is centralization and decentralization of authority. So what is centralization? Anybody knows the meaning of centralization? पता है कि centralization क्या होता है? Raise your hand if someone knows. किसी को पता है centralization क्या होता है? Yes, Aditi, Anushka, Sania, Sharon, Urvi. So am I audible or not? Can you hear me? Yes, मेरा ma'am. वॉइस आ रहा है आप तक? Yes, ma'am. सर क्या होता है सेंट्रलाइजेशन पता है किसी को? ये सानिया, अदिति, किसी को नहीं पता है? So I'll start the meaning of centralization. सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? Centralization. Centralization means it is the systematic reservation of authority at the central points within the organization. Means एक सेंटर पॉइंट पे ही एक जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, मोस्टली सेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल कहाँ पे होती है? इन द स्मॉल स्केल बिजनेस. जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं जहाँ पर क्या है, एक छोटे लेवल का बिजनेस, यहाँ पर एक हेड, एक टॉप मैनेजमेंट जो है वो सबके सब अपने इनिशिएटिव, सबके सब डिसीजन जो है वो खुद मेक कर, एक ऐसा सेंटर पॉइंट जहां पर हर एक डिसीजन, हर एक चीज खुद जो है इंडिविजुअली ली जा सके, कंपनी की या कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन की. दैट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन. हियर वी डोंट डेलीगेट द अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट्स. यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स को हम अपनी अथॉरिटी नहीं डेलीगेट करते हैं. Centralization means it is a systematic reservation of authority at the center point within the organization. जो एक सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट कहाँ है? जो हेड है, जो मेन कंपनी का क्या है, हेड ऑफिस है, सब उसके अंडर ही सब पावर्स होंगी. वही एक डिसीजन मेकर होगा और वो कोई भी अपना कंट्रोल, कोई भी कंपनी का कंट्रोल किसी भी वर्कर या किसी भी मैनेजर को हैंड ओवर नहीं करता है. दैट इज नोन एज centralization. Means all the decisions, all the authority to be kept by the one head or the owner or the center point. ठीक है? That is known as centralization. Retention, here it is written retention or concentration of managerial problem. Retention means it means to keep or to, we can say कि seize करना किसी powers को, या to the action of keeping something or someone to be kept, मतलब अपने पास रखना किसी चीज को, किसी पावर को. that is known as retention. Means here retention or concentration of managerial problems at the central point in the organization, which is never center of the organization. That is the, sorry, that is the which is nerve center of the organization, and that is the top management. मतलब सारी की सारी पावर्स, सारी की सारी अथॉरिटी एक ही हेड पॉइंट पे रखना, एक ही सेंटर पॉइंट पे रखना. एंड दैट इज नर्व सेंटर बिकॉज all the authority, all the powers, all the decision making power is इसकी होती है, is of the
हेड ऑफिस या सेंटर पॉइंट की, दैट सेंटर पॉइंट और दैट नर्व सेंटर इज नोन एज द टॉप मैनेजमेंट, या टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, दैट इज नोन एज द सेंट्रलाइजेशन। क्लियर है बच्चा? अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा, प्लीज लेट मी नो। Ask, if you are not able to understand, you can write in the chat box also. आप chat box में भी लिख सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। Yes, class क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, other students who join the class now, please write down your answer in the chat box. क्लियर है सेंट्रलाइजेशन? आगे और भी है इसका सेंट्रलाइजेशन के, हम विल स्टडी मोर। ठीक है। Here means centralization में क्या है, that everything that goes to reduce the subordinate's role in decision making is centralization। मतलब यहाँ पर subordinate का जो role है वो decrease होता है, because all the decision making power is in the hand of the center point or the top management। so यहाँ पर जो subordinate हैं उनको decision making power उनके पास नहीं होती है, so that is also known as centralization। It is a matter of journal prudence that every manager must reserve certain authority for overall planning, organization, command, motivation and control। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, एक ऐसी जर्नल इंटेलिजेंस है कि हर जो मैनेजर है उसके पास क्या है, सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुद ही सॉल्व करेगा, खुद ही प्लानिंग करेगा, खुद ही ऑर्गेनाइजेशन करेगा, खुद ही कमांड करेगा, खुद ही मोटिवेट करेगा, एंड इंडिविजुअल डू द कंट्रोल। मतलब यहाँ पर होल्ड द पावर्स, होल्ड द अथॉरिटी इज टू बी केप्ट by the top management। there is less burden on the subordinates to take the initiative, to take the decision. Wholly and solely is decision taken by the top management, so that is known as centralization। clear बच्चा? clear है? Yes, ma'am. प्लीज लेट मी नो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। मुझे पता चलना चाहिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मुझे बता दीजिए। इधर यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि आपको समझ नहीं आया है, तो मैं रिपीट कर दूंगी दोबारा से। क्लियर है सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग? ओके, so next is the benefits। what are the benefits, or we can say what are the advantages of the centralization? so first is the top management take all vital decisions। मतलब जो top management है that takes all the important decision by themselves। मतलब यहाँ पर क्या है, अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं किया है, देयर इज नो पावर given to the functions। यहाँ पर functions कौन से हैं, मीन्स जो हमारे फंक्शन हेड्स हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, इन सबको कोई भी पावर्स नहीं दी गई हैं, सबकी सब पावर्स जो हैं दैट इज kept by the top management। so he is the our top management is the decision maker, result in quick decision, as we have not delegated the powers to the subordinates, so quick decision quick decision is taken। how? because the decision is taken by only the one department, only by the top management। तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से डिसीजन लिया जाएगा, rather than taking suggestions or advices, or we can say from the subordinates। यहाँ subordinate से यहाँ पे discussion होगी ही नहीं, because सारा का सारा कंट्रोल किसके पास है, हमारा हेड के पास है, ऑनर के पास है, टॉप मैनेजमेंट के पास है। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग, सेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल ओनली इन द स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल पे सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज इट इज लार्ज इन साइज। यहाँ पर जब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वहां पर वी हैव
we have to delegate the authority to the subordinate, or we can say to the departments. Next is the uniform policy and coordination of all activities. मतलब यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म पॉलिसी, एक जैसी पॉलिसी, एंड वी कैन कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज बिकॉज द हेड, द टॉप मैनेजमेंट इज होली वर्क फॉर ऑल दैट. मतलब सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही काम कर रही है यहाँ पर, उसी को ही, मतलब यहाँ पर वही एक सिंगल है which have to make the rule, which have to take the decision, which have the power to take the decision. यहाँ पर एक ही है, so that's why top management can coordinate all the activities to be performed in the organization. Next is the effective and intelligent decision. Effective decisions and intelligent decisions to be taken in the centralization, because top management performs here a vital role. Next here, sorry. Crisis and emergency situations effectively managed. मतलब when there is trouble, when there is some kind of emergency is there, जब कोई crisis या कोई emergency arise होती है, so उस situation में the top management can take the decision quickly, or we can say the situation can be handled by the top management in an effective way, because he is the only decision maker. Clear? Okay. Successful handling of emergencies. In the centralization, the big benefit is the whole the emergencies is taken or is मतलब handled by the management successfully. मतलब वो बहुत अच्छे से handle कर सकते हैं, कोई भी emergency अगर arise होती है, the management can handle it very successfully. Higher specialization can be secured. यहाँ पर higher specialization secure की जाती है in the centralization. ठीक है, डुप्लीकेशन यहाँ पर अवॉइड की जाती है, लाइक डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कैन बी अवॉइडेड. यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट एफर्ट्स जो भी लगा रहा है वहाँ पे अवॉइड होते हैं, बिकॉज ओनली द डिसीजन हैज टू टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट ओनली. कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इजियर. यहाँ पर कंट्रोल इजी किया जा सकता है, यहाँ पर कम्युनिकेट इजीली किया जा सकता है, बिकॉज ओनली वन मेन हेड प्लेज द वाइटल रोल. बच्चा क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. श्योर क्लियर है? Yes, ma'am. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज लेट मी नो. अगर समझ नहीं आ रहा है प्लीज मुझे बता दीजिए, सो दैट आई विल रिपीट द टॉपिक अगेन. सो शैल आई मूव टू नेक्स्ट? आगे का करें? Yes, ma'am. ओके. सो नाउ देयर आर लिमिटेशंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन. क्या डिसएडवांटेजेस हैं? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन? क्या है? हियर फर्स्ट इज डिसीजन नॉट टेकन बाय द पीपल हु फेस द सिचुएशन. मींस now the top management is the decision maker, he has the power, authority, सब कुछ उसके पास है, but actual the work is done by the subordinates, by the foremen, by the workers. तो यहाँ पर जो एक्चुअल सिचुएशन है काम करने की, वो कौन फेस कर रहा है? वर्कर्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो यहाँ पर डिसीजन नॉट टेकन बाय पीपल, मतलब जो लोग एक्चुअल में फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, दे डोंट टेक द डिसीजन अबाउट द प्रॉब्लम और अबाउट द कंपनी, किसी भी चीज में वो इन्वॉल्व नहीं होती हैं, बिकॉज द अथॉरिटी इज ओनली इन हैंड विद द टॉप मैनेजमेंट. तो अथॉरिटी किसके पास है? सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास है. तो इसलिए जो लोग एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं. lower and middle level management will not have interest and initiative in the job. जो lower level है मतलब जो foreman workers हैं, और जो middle level management है, यानी जो managers हैं, जो different functions हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता
कि वो कोई डिसीजन ले सके, कोई इंटरेस्ट दिखा सके, ना ही वो इनिशिएट करते हैं कि वो अपना कोई सजेशन, अपनी कोई क्रिएटिविटी या अपना कोई थॉट जो है वो शेयर कर पाए. सो इट बिकम्स एन लिमिटेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन. Top management unnecessarily wastes time and energy on unimportant and routine matters. Here, whole the authority is with the top management. So यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट जो रूटीन वर्क है वहां पर टॉप मैनेजमेंट वेस्ट हिज टाइम, मतलब अपना वेस्ट करती है टाइम अननेसेसरी थिंग्स पर. जो थिंग्स क्या कर जो वो जो थिंग्स हैं that can be handled by the lower department also, that can be handled by the managers also, that can be handled by the foreman also. वो सबॉर्डिनेट्स भी हैंडल कर सकते हैं. कुछ ऐसे रूटीन वर्क है जिसपे टॉप मैनेजमेंट का इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, बट वो वहां पर क्या है, it becomes limitation because wholly solely control जो था centralization के पास था. So here centralization का जो है टाइम वेस्ट ज्यादा होता है on an unimportant and routine matters में. Hampers effective communication. Hamper means interruption or we can say disturbance. ठीक है, or we can say there is something difficult to make effective communication with the entire organization. यहाँ पे organization में इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है, देयर इज डिस्टर्बेंस काजेस. क्लियर बच्चा? Yes, ma'am. ओके. सो this is all about the centralization. Here let's have a small note. यहाँ पर पढ़ लेते हैं. यहाँ पर क्या है, here it is written that complete centralization is impossible without some measure of डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. मतलब कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन जो है वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है बिना कुछ तरीके से, बिना कुछ डेलीकेट किए ये अथॉरिटी अगर जब तक हम किसी को डेलीकेट नहीं कहेंगे उसके बिना जो सेंट्रलाइजेशन जो है फुली कंट्रोल जो नहीं हो सकता है. हाँ, एक शॉप होगी वहां पर सेंट्रलाइजेशन जो है वो पॉसिबल है, बट स्मॉल स्केल्स के लिए भी कुछ हद तक हमें पावर्स को डेलीकेट करना पड़ेगा. वी हैव टू डेलीकेट अथॉरिटी टू द subordinate. So when an organization is large and complex, management can't centrally control all the information necessary for decision. So जब organization large है, or we can say a complex organization is there, so वहां पर management जो है वो centrally control नहीं की जा सकती है. Here what we have to do, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, see, यहाँ पर क्या करना है, in such a case the only solution is to be divide the organization into autonomous decision making units and have multiple decision centers spread in over in the organization structure. मतलब उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, कि हमें क्या करना है, ऑटोनोमियस डिसीजन मेकिंग यूनिट्स. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, उनको एक हर एक बॉडी को एक एक यूनिट्स डिवाइड कर देनी है ताकि वो यूनिट्स खुद एक डिसीजन मेक कर सके. अपनी एक एक यूनिट्स हमने डिवाइड कर देंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे स्ट्रक्चर में हम लोग डिवाइड कर देंगे कुछ डिपार्टमेंट्स में, सो दैट हर डिपार्टमेंट अपने अपने अंडर वर्कर्स का क्या कर सके, डिसीजन ले सके. सो वहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीपल डिसीजन सेंटर्स जो है स्प्रेड हो जाएंगे. सो हियर इट इज क्लियर कि सेंट्रलाइजेशन है दैट इज नॉट पॉसिबल in the large or in the complex organization. It is only possible in the small scale organization, but there also some kind of authority, or we can say some kind of authority is delegated to the subordinates. And in the complex organization we have to make the autonomous units, so there the authority is delegated to them. So in the decision making we can collect, or we can have the decision by the multiple decision making bodies or multiple decision making centers. Clear hai bacha? This is all about centralization. Is it clear to Yes, you all? ma'am. Sure? Yes, ma'am. Yes, Karen. Clear? So, ma'am, हाँ जी बच्चा. ma'am, could you explain the topic distance from customers, disadvantage of
centralization. Ma'am, in You are page reading number, from the book? You're yes, reading ma'am. from the book? Yes, ma'am. The topic is, I don't understand that topic. Oh, See, डिस्टेंस फ्रॉम द कस्टमर. देखो यहाँ पर क्या है, मोस्टली कस्टमर्स के साथ कौन डील करता है? कौन डील करता है? हमारा मिडल मैनेजमेंट डील करती है, या फिर हमारे कौन से वर्कर्स डील करते हैं डायरेक्ट कस्टमर के साथ? क्या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि अगर हम किसी किसी भी जगह जा रहे हैं, कोई भी आप, इफ यू टेक एग्जांपल, हाँ, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो कहीं पे भी, ठीक है, तो वहां पर आपने देखा है कि आप सीधे के सीधे रेस्टोरेंट के ओनर से मिल रहे हो? नहीं मिल रहे हो ना? आप वहां किससे मिल रहे हो? मिडिल मैनेजमेंट से. सो अगर वहां पर सेंट्रलाइजेशन है, अगर वहां पर होली एंड सोली डिसीजन इज टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट, तो यहाँ पर क्या है कि देयर इज डिस्टेंस फ्रॉम कस्टमर. मतलब जो डिसीजन लेना है टॉप मैनेजमेंट ने, वहां पर कस्टमर रीच नहीं होगा. अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है वहां पर, तो वो क्या करेगा? वो किससे वो डील करेगा? वहां पर जो मैनेजर्स हैं. तो वो मैनेजर्स क्या है? दे डोंट हैव द पावर. वहां पर उनके पास पावर नहीं है, ठीक है. सो ये किसकी डिसएडवांटेजेस भी बन गई कि यहाँ पर क्या है, जो पावर वाली बॉडी है, मतलब जिनके पास अथॉरिटी है, वहां पर जो कस्टमर है उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता. वहां पर कस्टमर जो है वो डायरेक्टली उनको अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकता, सो दैट द मैनेजर और द जो जिससे वो डिस्कस कर रहा है वो क्विकली डिसीजन ले सके. समझ आया? क्लियर हुआ शेरन? yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आया? मतलब यहाँ पर क्या है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूरी बन गई, क्योंकि अगर वो कोई जैसे कोई रेस्टोरेंट में गए, कुछ कंप्लेन है, तो वो फटाफट, अगर मैनेजर के पास अथॉरिटी है, तो मैनेजर क्या करेगी? मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर उसी टाइम जो है वो एक्शन लेगा. लेकिन अगर उसके पास, अगर वो सेंट्रलाइजेशन है, वहां पर उसके पास पावर ही नहीं है, तो कस्टमर उसको कोई प्रॉब्लम बता देगा, तो वो क्या होगा? वो आगे एबल ही नहीं होगा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. तो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर जो है डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है बिटवीन द डिसीजन मेकर, जिसने डिसीजन लेना है, आर वी कैन से द प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला जो है, और जो कस्टमर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पास हो जाता है. So that becomes the disadvantage, or we can say the limitation of the centralization. Clear, bacha? Huh. So shall I move to the next? Yes, ma'am. So here it is the decentralization. So what is the meaning of decentralization here? Decentralization is a Sharon. So decentralization means, sorry, yes, it is the systematic and consistent delegation of authority to the levels where the work is to be performed. मतलब यहाँ पर क्या है? authority is delegated to all the levels. यहाँ पर क्या है? work perform किया जा रहा है, जहाँ पर काम हमारा हो रहा है, वहां पर हमारी authority जो है वो delegate की गई है to the workers, or we can say to the functions. This is the definition which is given by Louis Allen. Now it refers to the systematic efforts to delegate the lowest level all the authority except that which can only be exercised at the sentiment. मतलब यहाँ पर क्या है कि सारी की सारी अथॉरिटी जो है वो किसको दी जा रही है? लोअर लेवल को. बट कुछ किस एक्सेप्शन में क्या है, कुछ ऐसी अथॉरिटी जो किसने, सिर्फ सेंटर ही हमारा डिसीजन मेक करेगा, उस अथॉरिटी को छोड़ के rest all the authority we delegate to the lower level management. So that is known as decentralization. Clear? Yes, ma'am. Class clear hai? Yes, Okay. ma'am. So here more definition is there. Henry Fowler ने बोला है that everything that goes to increase the importance of the subordinates role is decentralization. मतलब यहाँ पर क्या है, सबॉर्डिनेट्स के रोल को क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, उनका रोल इंक्रीज हो रहा है. सो और एंड जो सेंट्रलाइजेशन है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उनका रोल डिक्रीज हो रहा है. दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब
यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो सबॉर्डिनेट्स को मिल रही है, उनका रोल इंक्रीज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड द रोल ऑफ सेंट्रलाइजेशन और वी कैन से द टॉप मैनेजमेंट, उनका रोल डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन. So in decentralization, the decision making power will be wide spread. मतलब यहाँ पर decision making power जो है वो widely spread to the all departments. सबको सब वर्कर्स के बीच में जो है वो पावर जो है वो डिवाइड हो चुकी है. सो इट इज अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट authority to the lower level. So it is a systematic way to divide all the authority, or we can say all the efforts, to the lowest level. Clear बच्चा? स्टूडेंट्स क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's move on to its benefits. What are the benefits of decentralization? Relieves top management of the burden decision making. मतलब यहाँ पर क्या है? It relieves to the top management के burden के, मतलब all the decision is taken by the टॉप मैनेजमेंट इन द सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन में क्या था, सारे के सारे डिसीजन जो थे वो टॉप मैनेजमेंट लेती थी, बट डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो यहाँ पर उनका रिलेशन, उनके डिसीजंस को क्या करती है, रिलीव करती है, उनको क्या है, उनको बेटर फील कराती है दैट दे शुड स्टॉप टू टेक डिसीजन एंड द लोअर और द मिडल मैनेजमेंट कैन टेक द decision making burden. So it becomes benefit for the it becomes the benefit of the decentralization. Next is forces lower level management to participate effectively. Decentralization में क्या है? It forces to the lower level management to participate in the decision making, or we can say in the in taking decision or initiate their views. यहाँ पर क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो लोअर लेवल को क्या करती है, फोर्स करती है कि यहाँ पर वो पार्टिसिपेट करें इन द डिसीजन मेकिंग, सो दैट वहां पर दे नो द टॉप मैनेजमेंट नो बेटर, बिकॉज जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली फेस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, बिकॉज वो एंड लेवल पे वही काम कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को, सो दैट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट रन्स इफेक्टिवली. नेक्स्ट इज द इजेज द बर्डन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव. मीन्स यहाँ पर क्या है, eases means less painful, or we can say to become or make something less painful. मतलब यहाँ पर क्या है, जो बर्डन है ऑन द चीफ एग्जीक्यूटिव, ऑन द टॉप मैनेजमेंट, वहां पर कम हो जाता है इन द सेंट्रलाइजेशन. encourages decision making and assumption of authority and responsibility. यहाँ पर in the centralization, here decision making is encouraged by the top management so that the middle and lower level can give their views or decisions. ठीक है. सो यहाँ पर क्या है, assumption of authority and responsibility. मीन here assumption मैंने बताया था, assumption means act of taking power. here means कि जो authority and responsibility है वो किसके पास आ जाती है, to the subordinates. ठीक है. so here subordinate has the authority and power, or we can say authority and responsibility to take the decisions at the lower level. Clear students? Yes, अच्छा ma'am. ठीक है. So some more benefits are here. Gives manager more freedom and independence in taking decision. Decentralization में क्या है, managers के पास ज्यादा freedom आ जाता है to get the decision or to make the decisions in the organization. Aids in adaptation to fast changing environment. Here decentralization becomes an tool, or we can say becomes an एक ऐसा environment बना देते हैं, एक ऐसा यहाँ पर एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि कोई भी चेंजेस होती है इन द फ्यूचर, अगर कोई भी टेक्निकली या कोई एनवायरमेंटल कोई भी चेंज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, सो वो इजीली अडॉप्ट की जाएगी बाय द ऑर्गेनाइजेशन. सो जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस होंगी वो इजीली उसको उसमें डल जाया जाएगा बाय द वर्कर्स, because they are making the decision, they are facing the problem and they know how to handle the problem. So वो easily grasp कर लेंगे जो भी environment changes होंगे. Capable managers can be developed. यहाँ पे managers की capability जो होगी वो develop होगी because they are involved in the decision making
of the organization. So बच्चा clear है? Clear? Yes, ma'am. So here last is the limitations of decentralization. So what are the limitation? A handicap in case of quick emergency decision. यहाँ पे जो है company becomes handicap because all the decision is not taken by the top management only. Here the power is divided to the